Good morning everyone. Students, today in the economics class we are continuing the same chapter, that is employment growth, informalization and other issues. Today in this chapter I am going to explain you about the unemployment. What is unemployment, students? Unemployment is the biggest problem in India that India is facing from the last many years. That is, this is the acute problem, and a number of people are suffering from this problem. Unemployment, it is a situation when all those people who are able to work, willing to work, but they do not get work for themselves, that is, they are unemployed. So this problem is very acute in India, and number of people are suffering from this problem. That is, this problem creates so many economic problems in India, and because of unemployment, because of this situation, India is facing poverty also. So what is really the meaning of unemployment? Unemployment, it refers to a situation in which people are willing to work and able to work and the existing wage rate but do not get work. Means people are willing to work, लोग काम करना चाहते and they are able to work, वो काम करने के लिए able भी है, but and also they are ready to work at the existing wage rate, whatever the wage rate available to them, they are ready for doing work on that rate also, but they are not getting employment. So this is known as unemployment. This is the biggest problem. This is the acute problem. This is a chronic problem that our India is facing. This problem of unemployment. In India, the problem of unemployment is temporary because people are unemployed. People are not able to get work, but they cannot remain unemployed for a longer period because of their poor financial condition. इंडिया में बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, एंड देन ऑल्सो द पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क फॉर देमसेल्व्स. बहुत सारे लोग जो है उनको अपने लिए काम ही नहीं ढूंढ पाते. दे आर एबल टू वर्क बट दे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वर्क, दे आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. लेकिन वो बहुत दिनों तक घर में अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकते. सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्पररी इन इंडिया बिकॉज ऑफ देयर पुअर फाइनेंशियल कंडीशन. उनकी घर की कंडीशन इतनी पुअर है कि दे आर नॉट एबल, इफ दे आर नॉट वर्किंग तो दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. So for meeting their basic necessities, they can be they are forced to work whatever the work they can get. अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको जो भी काम मिलता है, जैसा भी काम मिलता है, वो उसी को करने के लिए तैयार हो जाते हैं. बिकॉज वो ऐसे खाली बैठेंगे तो या तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी पुअर. सो this unemployment problem is India is facing is the biggest problem that we have to solve this particular problem. Now what are the sources of unemployment data? इंडिया में जो हमें इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम वेयर वी गेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीपल दोज हु आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया. सो वी कैन गेट द इन्फॉर्मेशन of about the unemployment from the reports of Census of India. Census of India, you know that it is a census survey was done in every 10 years. And you know student that in the 2021 our next census survey will be conducted. So in this particular survey we are getting information about the number of people living in India, man, male, female, and also we can get the information about the number of unemployed people also. So this is the main source of getting the data regarding unemployment कि कितने हमारे देश में लोग unemployed हैं. इसका डेटा हमें यहाँ रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया सेंसस सर्वे से मिल सकता है. नेक्स्ट है NSSO, दैट इज नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में NSSO भी कहा जाता है. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गिव्स अस डेटा अबाउट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल. कितने हमारे देश में लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से भी मिल सकती है. दैट इज इन द सेंसस सर्वे द डेटा शुड बी गोज टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और उसके थ्रू भी हमें अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है. नेक्स्ट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग. This Director General Employment Training is providing information of the about unemployed people from last 30 years. That is EMI, Employment Training Program is there. That is, they are providing information about the unemployed people. And this Director General of Employment also working from the last 30 years. That is 30 years from continuing, they are giving us data about the unemployed people. So these are the sources of इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम अबाउट अनएम्प्लॉयड. हमें यहाँ इन तीनों सोर्सेज से हमें अनएम्प्लॉयड के बारे में डेटा मिल सकता है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि हमारे देश में कितने लोग जो है वो बेरोजगार हैं. आइदर वी आर गेटिंग फ्रॉम सेंसस ऑफ इंडिया एंड आल्सो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन,
or Directorate General of Employment and Trading. This also gives us data about unemployed people. Now the types of unemployment in India. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स का है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया दैट वी आर फेसिंग various types of unemployment. So the main type of unemployment in India are, number one is disguised unemployment. Second is seasonal unemployment, and then the third is open unemployment. So these are the different types of unemployment in India. हमारे यहाँ कई तरह के unemployment है. एक तो disguised unemployment है, seasonal unemployment है, open unemployment है. So students, you can understand what is the unemployment. That is unemployment क्या है? Unemployment एक वो situation है जिसमें कि लोग काम तो करना चाहते हैं, they are willing to work and also they are able to work at the existing wage rate, but they are not able to find work for themselves, that they are not getting work. So this situation is known as unemployment, and the unemployment in India is of different types like disguised unemployment, seasonal unemployment and open unemployment.